So let us begin the session for today. तो आम प्रीवियस ईयर ओपीएससी क्वेश्चन भी देखिले तुम देखिए 5-6टा पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चन सब बेले ही पड़ी था लास्ट 2-3 वर्ष देखुच तुम पब्लिक पॉलिसी 5-6टा क्वेश्चन डेफिनेटली पड़े तो आम प्लान कर दुईटा सेसन रे आम पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा ओके और लेट अस स्टार्ट फॉर टुडे आज आम फास्ट 4टा चैप्टर पढ़ा ओके फास्ट चैप्टर पढ़ा नेक्स्ट सेसन रे आम बाकी सब सारदे सो Chapter 1 Introduction to Public Policy. We will understand the important concepts and its significance. The concept of welfare state has made public policy a core concern for social scientists. Okay, so let us understand what is a welfare state and what is a night watchman state. Alright, so classical liberty की classical economics रा idea रही तमर night watchman state आसची. It means that the role of state is restricted to implementing the law and order of society. The state has no role in dealing with social justice or uplifting the downtrodden sections of society. Society रे let the survival of fittest continue. जे one who is capable they will go up, जहाँ जे capable नुह they will go down. सोसाइटी रा काम नुह कि गवर्नमेंट रा काम नुह जे जे तलू जाउछन्ती तांकर पई किछि वेलफेयर करिवो नाही. सोसाइटी काम गवर्नमेंट काम हूँ जो मैंने लॉ एंड ऑर्डर को खाली मेंटेन कर रख एंड टू एनश्योर ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ दोज हु कैन कम्पीट इन द मार्केट ओके जी कम्पीट कर पारना दैट इज देयर फॉल्ट लेट देम सफर ओके दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट वॉचमैन स्टेट वेयर द स्टेट वाज मैंडेटेड टू बी ए अंपायर स्टेट वाज नॉट अलाउड टू बी ए प्लेयर इन द इकोनॉमी ओके वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट कौन है जो नहीं नाइट वॉचमैन स्टेट कॉन्सेप्ट बहुत इनइक्वालिटी बढ़ीगला तुम डिस्क्रिमिनेशन बढ़ीगला तो सोसाइटी रे सोशलिज्म हो तुम मार्क्सिज्म की कम्युनिज्म आइडिया तापर आसला देन कम्स दी वेलफेयर स्टेट नहीं सोसाइटी गवर्नमेंट विल with enforcement of laws government will also try to uplift the downtrodden sections of society because not everyone starts from the same pedestal okay तो समस्तंकर हिस्टोरिकली किसी कंट्रीब्यूशन किसी डिसएडवांटेज एडवांटेज अच्छी तो से हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को लेवल आउट करने टू प्रोवाइड एवरीवन ए प्लेइंग फील्ड द गवर्नमेंट विल बिकम ए वेलफेयर स्टेट मीन्स तुम्हारा गवर्नमेंट विल इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस to achieve the health outcomes, poverty outcomes, to reduce inequality, okay, on the concept of social justice. So that is the concept of welfare state. With the emergence of welfare state, public policy is a core concern for social scientists. All right. Modern problems like the urbanization, industrialization, population growth, they need state-led solutions via public policies because प्राइवेट सेक्टर केवल से ही कामटा कर जो थे कि प्रॉफिट आनी पार से पब्लिक वेलफेयर पे काम करनी बिकज से प्रॉफिट ना ओके हाँ अर्बानाइजेशन प्राइवेट सेक्टर कर बट जो थे कि तार फायदा हो तुम सपोज जमी तुम राउरकेला स्टील सिटी तो से स्टील सिटी टाक राउरकेला जो स्टील इंडस्ट्रीज मैंने अच्छा से मैंने इम्प्रूव कर तुम बोकारो स्टील सिटी तो सहीटार इंडस्ट्री मैंने ही से इंडस्ट्री को अर्बानाइज कर एरिया को तांकर किसी ब्रॉड पर्सपेक्टिव ना से सोशल वेलफेयर करेंगे ओके तो अर्बानाइजेशन समस्त पाखे केमती पहुँच पार दैट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट ओके इंडस्ट्रियलाइजेशन सो दैट इट बेनिफिट्स एवरीवन इन एन इक्विटेबल मैनर that is the concern of the state okay population growth है तो these स्टेट काम वेलफेयर स्टेट रोल बहुत अधिका बढ़ी जीवो ओके तो यही जो इंक्रीज रोल ऑफ स्टेट को फुलफिल करने आम पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करुचे ओके सो ए पॉलिसी इज ए गोल ओरिएंटेड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन either explicitly stated or implicitly stated okay so what is a policy it is a statement of the goal to be achieved by the society by the organization or the government okay that can be implicitly stated or explicitly stated okay so concepts of public policy so public what is public refers to collective interest seen in terms like public health public finance etc okay public means open to all okay collective interest open to all private sphere public sphere it is open to all where collective decisions are discussed okay से कहा प्रति डिस्क्रिमिनेशन हम ना
Private sphere, it is a personal space. There are personal house ki personal property, private property, that is the personal space. It requires permission, okay, to enter. Okay, public space re kahaku kiछि permission darkar nahi. Everyone is free. Everyone is free to deal in the civil society. Public sphere को तमें civil society भी कह पारिबो. Okay, public sphere and private sphere. Family is the private sphere and civil society is the public sphere. As per Habermas, Jürgen Habermas, public sphere allows private individuals to gather and engage with the state. Okay, public sphere रे private individual माने आसिकी ସେମାନେ state को demand करि परिबे तांकर कोन demand अछि necessity अछि. Okay, so W.B. Weber he listed difference between public and private sector. कि public sector the tasks are more complex because there are variety of stakeholders. So variety of stakeholders means many variables to manage, so that task is complex. Harder to implement policies, as I said, task बहुत लोक अछंती, बहुत stakeholder अछंती. Symbolic significance, okay, public policy रो may be direct किछि for the timing direct किछि return न आसी पारे, but it has symbolic significance, एटा फ्यूचर भी आसी पारे. ओके, लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन हो, आमर प्रिएम्बल हो कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, दे डिक्टेट द स्टेट टू डू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ओके, तो पब्लिक पॉलिसी रे लीगल ऑब्लिगेशन भी रहुजी ऑफ द गवर्नमेंट, कमिटमेंट टू फेयरनेस, जस्टिस एंड पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, so this is all about public sphere and private sphere. So policy is a plan of action to address issues via rules, regulations and decisions. Okay, how good and gun give 10 uses of the term policy. Policy means it is an activity, it can be expression of the desired goals. Okay, it are proposals to do something, decisions, programs, outcomes. All right, so it is darkar nahi, bas to understand the idea of policy. Policy types: macro policies and specific policies. Macro policies means broad framework, address a broad objective. Okay, specific policies, they are targeted decisions. Okay, तो macro policies गुड़ा तमरो broad objective को satisfy करे, specific policies are targeted decisions. Okay, macro specific रो तमे word नहीं जान पारथो. So definition of public policy: David Easton, a political scientist, he has said that public policy is authoritative allocation of values for society. Okay, authority, that is the governing body, will allocate the values, को value रे society चलिबो. Okay, that is the public policy. So Thomas Dye, he has said whatever governments choose to do or not to do. Okay, so this is the definition of public policy. Frohock, patterned attempt to resolve disputes and secure common goals. And Cochran and Malone, government decision and action on public concern. So Yehezkel Dror, so this is an important scholar and आंको आमे परे भी पढ़िबा. So public policy, they are general directives on actions to follow. Okay, Brian Smith, allocation of resources with legal and political values. Richard Rose, public policy is a series of related activities and not a single decision. James Anderson, purposive course of action by government actors. Okay, so सबू जाक डेफिनेशन मन रखा दरकार नहीं, बिकज सबुथे कहुच्छी पब्लिक पॉलिसी माने कौन, माने गवर्नमेंट कौन कर कौन न कर. ओके, जस्ट एटा परीक्षा पूर्व देखीदे जीव, बिकज एटा तुम OCS 2022 गोटे क्वेश्चन पचार what is true about public policy. It is a way of doing things including rules and regulations. Okay, it is true. It is authoritative allocation of values, as we have seen. Authoritative allocation of values, David Easton कही authoritative allocation of values for society. It is for public sector organization. Okay, yes, it can be for public sector organization, it can also be for private sector organization. Okay, जदि एटा it is for public sector organization only लिखि दै थांता, then statement भूल जाई थांता. Okay, it can be for public sector as well as private sector. Okay, that is public policy. What the government choose to do or not to do, that this definition was given by Thomas Dye. Okay, this definition was given by Thomas Dye. So definition of direct question आछि, तो ये definition ओटा just परीक्षा पूर्व देखि देई जीवो, you can easily derive the correct answer. So एथरे it is for public sector, that is true. So answer is all of the above. Okay, now essential characteristics of public policy. Public policy ra characteristics kono? It is a dynamic process with long term decisions. It can be also for short term decisions also. It is a dynamic and changing process, takes place within institutional frameworks. That is true. Institution will decide which policy to follow or not.
It involves inter-agency discussion, bargaining and resource exchange. That is also true. तो बहुत गुटे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन थ्रू ही पब्लिक पॉलिसी इमर्ज है, engages with external groups like NGOs and interest groups, directed at achieving desired outcomes, always justified as being in public interest. Please note this point, always it is justified. Okay, तो कौन से भी पॉलिसी गोटे गवर्नमेंट नौची सी केबे कहबनी जे मो पॉलिसीर किसी जस्टिफिकेशन ही नहीं, तेणिक से जस्टिफिकेशन जहाँ भी होता हो. ओके, तुम गोटे क्वेश्चन आसाला सेमती OCS 2023 रे, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट पब्लिक पॉलिसी. येस, जनरल हो पारे, स्पेसिफिक भी हो पारे. आम जमी ऊपर देखिलु माक्रो 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 पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, जनरल और स्पेसिफिक, ब्रॉड एंड नैरो, अगेन माक्रो की स्पेसिफिक, पॉजिटिव पॉलिसी, नेगेटिव पॉलिसी. येस, इट कैन बी पॉजिटिव रे तुमको डिक्टम दिखाई कौन कौन कर, नेगेटिव पॉलिसी रे कौन कौन स्टेट कर ना. ओके, से सब कहता है. रेशनल पॉलिसी, येस इट कैन बी रेशनल. इरेशनल देख, no government will say that my policy is an irrational policy. It is always justified as being in public interest. Okay, तेणु कि तुम हिटलर ज्यूज मान को एग्जिक्यूट कले तार भी सी जस्टिफिकेशन कहे हाँ मुझे कारण मु एग्जिक्यूशन कली. तुम डिक्टेटोरियल रेजिम्स जमी रशिया चाइना कि नॉर्थ कोरिया ए सब सिटीजन मान राइट को कर्टेल कराव, सेठी भी जस्टिफिकेशन थी जे आमर ऑब्जेक्टिव अचीव करने पॉलिसी फॉलो करुचे. ओके, सो नो गवर्नमेंट विल से दैट माय पॉलिसी इज इरेशनल. जो तुम यहाँ ही काटिदेव यू विल अराइव एट द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2 and 3. ओके, characteristics of public policy, scope and significance. Public policy has existed in all types of political systems, that is true. So workload of government is growing in modern societies, as I have said in the case of welfare state. Modern society workload is growing. Government need to tackle issues like poverty, technology development, resource use and quality of life. UN observations highlight the need for innovation, production and higher living standards. Okay, at the सब society aspiration. Scope is expanding. Scope of public policy is expanding with new challenges and non-traditional challenges like LPG reforms, with emergence of cyber security, no like climate change, terrorism. Okay, these are transnational things that no government can manage by its own. Okay, so scope of public policy is always expanding. Significance, central focus of public policy is people's problems. Okay, तो नारे ही अच्छी public. Okay, public means deals with the common people, समस्तों का तो people's problems. It helps to identify and place public issues on political agenda. Okay, it reveals the intention of government towards various communities. It also evaluates the government performance. Citizens are offered a way to assess the commitment of state towards equity and inclusiveness. Equity को तुम justice भी भाई पारो, towards justice and inclusiveness. It is essential for governance because no government can function without a policy. Okay, every department has a policy document reflecting its intention and objectives. Okay, for example, citizen charter. Citizen charter सब डिपार्टमेंट रो अलग अलग थाई पारे. So that is also, citizen charter can also be equated as a policy of that department, public policy of that department. Okay, foundations of public policy, as we have said, after revise कर दवा. Authoritative allocation of values of David Easton. So his Easton's view on societal value, authoritative allocation of values. Government choice, Thomas Dye. Perspective on government actions. Frogs, focus on resolving conflicts. On Cochrane and Malone, emphasis on public issues. Draw's view on guiding actions. Okay, general directions, that is public policy. Resource allocation, with perspective on resource allocation. And Rose view on policy as a process. ये दिन सोड़ा में देखिले यहाँ सब definition ओड़ा just मन रख दो. It can be derived in the exam. Okay, if you just remember it, you can derive the correct statement in the exam. So cycle of public policy, इस cycle टा बहुत थोड़ा repeat हबो. First होची decision making, policy decisions. Okay, first होची justification for the policy. Public interest by justification, policies are justified as serving public good. Then decision is made. Policy decisions are made with long-term implications. Institutions, they are engaged to implement with the policy within established norms. Interagency discussion, agencies discussion, negotiate policy detail, because बहुत गोटे policy implement करिया पे बहुत गुड़ा department involvement था, तो interagency discussion दरकार. External engagement, NGOs and interest groups are involved in policy discussions and future outcomes. Policies aim to achieve specified goals. Okay, so this is the cycle of public policy making. Now, public policy process in India, how it is formulated and how it is implemented.
Public policy is a continuous and evolving process. Okay, as you have seen, it is a dynamic, continuous and evolving process. Anderson, he has said that policy is being made as it is being administered and administered as it is being made. Okay, तो पॉलिसी अच्छी, पॉलिसी को आम आडमिनिस्टर कले, ओके पॉलिटी जहाँ आडमिनिस्टर कले तार जहाँ आम एक्सपीरियंस है से आम शिखिकी पुणी पॉलिसी को रिफॉर्म करवा. ओके सो पॉलिसी को तैयारी कला बेले ही तार आडमिनिस्टर करा जिबार एक्सपीरियंस को नहीं ही आडमिनिस्टर करा जाए. आडमिनिस्टर कला परे से एक्सपीरियंस को यूज करी पुणी पॉलिसी मेकिंग करा जाए. ओके सो दिस इज द साइकिल ऑफ दिस डेफिनेशन वाज सेड बाय Anderson. Policy is being made as it is being administered and administered as it is being made. Berkland, policy process as a system that converts ideas into actions and these actions result into outcomes. David Easton, he has said that input-output model, inputs are entered into the political system and then give output. एक black box model अच्छी जोटा हमें इस सेशन में पर देखिवा. Okay. Stages in policy process. First होची identify the problem, define the root issues conceptually, diagnose the governance and market failures in the pollution की poverty. Okay, so identify the problem and diagnose why this problem has occurred. Then determine policy alternatives, explore various interventions. Okay, ता बदले भी कौन करी हबो, ता माने सही पॉलिसी रे कौन कौन सब करी हबो. ओके सही पॉलिसी ऑब्जेक्टिव अचीव करिया को एमती गैंगेज रे पॉल्यूशन अच्छी तो पॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव कमियार अच्छी तो कौन कौन सब करी हबो, पॉल्यूटर मान को रेगुलेट करी हबो. एफ्लुएंटर चार्जेस आसाइन एफ्लुएंट चार्जेस जी डंपिंग कर चार्जेस पकई हम डायरेक्ट ना स्टेट जाकि डायरेक्ट क्लीन अप कर. ओके दीज आर दी पॉलिसी अल्टरनेटिव्स. ओके नेक्स्ट कम्स दी फोरकास्टिंग एंड इवालुएटिंग अल्टरनेटिव्स. सो अल्टरनेटिव्स को केमती आम इवालुएट करवा. वी कैन यूज मॉडल्स, डिसीजन ट्रीज, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. ओके वी कैन कंसीडर द रिस्क, स्टेक होल्डर इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी to forecast and evaluate the alternatives which one we should adopt for optimal results. Policy को select करा जो choose the optimal policy by evaluation, factor in stakeholder preference and resource realities. Policy implementation. Implementation is the stage that acts as a bridge from intention to outcome. जहाँ प्लान करते हैं ताको फील्ड रे एग्जीक्यूट करिवो. This implementation needs resources, clarity of thought, institutional strength and political will also. Okay, what are constraints? Political pressure, bureaucratic skill gaps and public apathy. If the public does not want the policy to be implemented or the bureaucrats are not up to the mark or the political pressure. Okay, these are constraints on policy implementation. Now policy monitoring. So this tracks the progress and deviation key to mid course correction. जदि मॉनिटरिंग कंटिन्यूस हो तो को जगार पॉलिसी जदि किसी फेल कला तो सेटा को आम मिड कोर्स रे करेक्ट कर परिबा. ओके सो व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिसी मॉनिटरिंग? पुअर सिस्टम डिजाइन हेले तुम मॉनिटर करिया कष्ट हो. कम टाइम शॉर्टेज हेले तो मॉनिटर कर परिबोनी. लैक ऑफ करेक्टिव कैपेसिटी. जदि इन केस जदि हाथरू इट द डिसीजन गोज आउट ऑफ हैंड्स तुमको मैनेज से क्राइसिस को मैनेजमेंट करिवार कैपेसिटी भी रहिया दरकार. सेटा नथिबो देन तुम पॉलिसी मॉनिटर ठीक से ही परिबोनी. ओके पॉलिसी आउटकम्स. सो पॉलिसी आउटकम्स आर नॉट द आउटपुट्स. ओके पॉलिसी आउटकम्स आर नॉट द आउटपुट. आउटकम जोटा आम भाविचु, आउटपुट जोटा रियलिटी जोटा है. ओके आउटपुट इज द व्हाट हैपेंस इन रियलिटी. So we should access the real impact on intended beneficiaries. So our policy outcome, what we think should be in line with the reality, in line with the policy output. For example, unoccupied housing despite build infrastructure. Okay आम infrastructure build करदेलु सपोज बट से डिमांड ही ना तो सेटा अनऑक्युपाइड रहिबो तो आमर आउटकम थिला आम अफोर्डेबल हाउसिंग दबु बट आउटपुट कौन है कि हाउस नौ ना एंती. ओके सो these are the example of bad policy outcome. Policy evaluation measures the effectiveness and goal achievement, helps revise and terminate the policies that are ineffective, clarifies the underlying values of policy and reveals unintended consequences. Okay and design of evaluation को केमते डिजाइन करा जिवो. फास्ट होची तुमर इवाल्युएशन रे गोल सेटिंग, इम्पैक्ट कौन है ताको मेजरमेंट करने कैपेसिटी रहा दरकार. एभालुएटर्स हु विल एभालुएट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी केते कौन अचीव है दे शुड बी ट्रेंड. पॉलिटिकल विल भी थी दरकार टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी. ओके जदि गोटे एभालुएशन होती जदि तार किसी नेगेटिव फीडबैक आसुची तो सेटा को एक्सेप्ट करिवार
करेज रहा दरकार ओके इभालुएसन कैन बी कंटेंशियस ये जिनसा इट मे रिइनफोर्स और प्रोवोक कॉन्फ्लिक्ट ओके तो जो इभालुएसन हम तो जो ब्लेम गेम हो पारे जो ये कह ये आंकर दोष तांकर दोष ओके नो वन इज टेक टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ओके फॉर द बैड पॉलिसी डिसीजन ओके इभालुएसन कैन लीड टू दिस कंटेंशियस इश्यूज ओके तो OCS 2022 रे गोटे क्वेश्चन पचारा ड्यूरिंग व्हिच पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी साइकिल डज द गवर्नमेंट एक्सप्लोर पोटेंशियल पॉलिसी रेस्पॉन्सेस ओके पॉलिसी रेस्पॉन्सेस तो पॉलिसी रो जहाँ भी रेस्पॉन्ड हम मीन्स पॉलिसी रू जहाँ तुमर आउटकम आसीबो सेटा को टाइम रे तुमर को पार्ट रे तुमर ड्यूरिंग व्हिच पार्ट द गवर्नमेंट एक्सप्लोर पॉलिटिकल पॉलिसी रेस्पॉन्सेस ओके वैल्यू सेटिंग नहीं दिस इज द इनिशियल स्टेज पॉलिसी फॉर्मुलेशन यही टाइम रे तुम पॉलिसी उपरे रेस्पॉन्सेस सब आसे ओके तो दिस इज द आंसर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन रे रेस्पॉन्स आसेनी पॉलिटी फीडबैक एटा लास्ट स्टेज ओके एथरे फीडबैक ही आसे एथरे दिस इज द लास्ट स्टेज एटा एथरे तुम रेस्पॉन्सेस हाँ तुम फ्यूचर रे तुम इम्प्लीमेंट करिकी पुणी इनपुट दे पारिबो बट दिस इज द लास्ट स्टेज एथरे पॉलिसी रेस्पॉन्स को कैलकुलेट करा जाएनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन टाइम रे ही तुम पॉलिसी केमती तैयारी हम कौन करा जीवो सेथरे ही पॉलिसी रेस्पॉन्सेस को इंक्लूड करा जाए सो आंसर इज बी ओके सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑलराइट सो फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ओके फॉर्मुलेशन टाइम रे ही तुम पॉलिसी जहाँ भी रेस्पॉन्ड माने पॉलिसी को केमिति कौन कर तुम सब इंस्टीट्यूट सिविल सोसाइटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब आड़ू रेस्पॉन्स नहीं कि ही तुम फॉर्मुलेशन पब्लिक कर पब्लिक पॉलिसी को ओके सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन टाइम रे ही तुम वेरियस रेस्पॉन्सेस को इंक्लूड कर पारिबो तुम पॉलिसी रे ओके सो हाउ पब्लिक पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड फर्स्ट होची कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सो दिस आल्सो helps to design policies because it is the democracy means rule of people so you cannot do something that is goes against the people okay so democratic republic parliamentary structure and federal structure they also determine how policy will be formulated it is guided by preamble fundamental right DPSP okay preamble la sabu authoritative allocation of values jemti justice liberty equality fraternity unity and integrity of the nation okay fundamental rights they gave us civil and political rights directive principle of state policy they gave us social and economic rights okay so all these values they help in formulation of public policy institutional factors legislature executive and judiciary एटा तीनटा institution ही थाए प्राय सबुठी they determine public policy legislature it enacts and legitimizes the policies debates discussion हुए that influence policy making executive it is the primary policy formulator okay तुम्हारा top executive they just the legislature they give the broad skeletal framework of a policy okay तार broad skeletal framework दियंती तापरे they delegate the nitty-gritties to the executive then the executive gives the flesh and bones to the skin to the skeleton of the policy and the policy formulation be executive करे through delegated powers okay the key elements of policy formulation cabinet prime minister ministries and departments okay judiciary they use judicial review to say which policy is constitutional or non constitutional they also influence policy by public interest litigation and judicial decisions okay NGOs also influence policy making political parties and pressure groups they also influence policy making okay political parties and pressure groups they influence policies via manifestos lobbying organized groups where the group is more organized they have more say in policy making individual citizen and media also citizen participation via elections they can also affect policy making media also shapes discourses and influences the agenda okay external agencies they also influence policy especially in health economy and environment for example united nations ro tamara climate change agreement ho okay tamara climate change agreement ro tamara jenti nationally determined contributions okay they also influence policy WHO ro guidelines jota corona time re tamara bahut implement heitala IMF they influence the LPG reforms of India World Bank ro bahut gude project India re हुए okay so these external agencies they all can also they also have a role in formulation of policies
Okay, now policy implementation. Policy must be executed effectively to create real impact. To this execution requires resources, capability, and inter-institutional coordination. All right. So who are the implementers? The bureaucracy is the main implementer. Okay. तो यहाँ भी तुम यूपीएससी रे भी क्वेश्चन आसाला व्हाट इज द जॉब ऑफ ब्यूरोक्रेसी. जॉब ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज टू एक्जिक्यूट द पॉलिसीज. ओके, एक्जिक्यूट द पॉलिसी, दैट इज द प्राइमरी जॉब ऑफ ब्यूरोक्रेसी. हाँ, से पॉलिसी तैयारी करे बट दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ओके, दैट इज नॉट ओरिजिनल लेजिस्लेशन. ओके, ब्यूरोक्रेसी काम हो टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी. लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी दे check and limit the power of bureaucracy. Other actors who implement policy like NGO मान साथ एसोसिएशन रे एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करे, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट्स. ओके, so they implement policies. So conditions for success of public policy, Sabatier and Mazmanian. Okay, but not so important. So it just this is a corollary. You can, this is just deductive. Okay, logically तुम जदि statement पढ़िबो तो एटा करि पारिबो. What are the conditions for success of policy? Sound program assumption. Okay, से प्रोग्राम रे कौन कौन ऑब्जेक्टिव अचीव करार अच्छी, तार इंटेंशन कौन करार अच्छी, जदि पूरा ठीक से डिफाइन हो ताहले देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ दैट पॉलिसी विल बी हाई. क्लियर डायरेक्टिव अच्छी, क्लियर हायरार्किकल स्ट्रक्चर अच्छी, कहार रोल कौन डिफाइन कराई, देन ऑल्सो that will lead to success. Leadership should be committed. Okay, leadership should be committed towards the goal of the public policy. Political support and legal support should be given. Stable policy priorities over time. Okay, जदि बारंबार पॉलिसी चेंज करा जीवो तो ऑब्जेक्टिव को पहुँचे कष्ट हो. जमी आम ओडिशा रे मेट्रो रेल जमी प्रीवियस गवर्नमेंट स्टार्ट कला बट दिस गवर्नमेंट हैज पुट दैट प्रोजेक्ट ऑन बैक सेल्फ. ओके, तो स्टेबल पॉलिसी प्रायोरिटीज ही दरकार तुम पॉलिसी सक्सेस पाई. Implementation should have clear directives, resource allocation, monitoring of actions to stop any crisis beforehand, proactive intervention, and institutional coordination. These are important for implementation of policy. Again first public policy cycle same things. तुम्हारा identify the problem, define the root issue and diagnose the failures, determine alternatives, explore other interventions. Okay, forecast and evaluate, use models and consider the impact, select the policy. Optimal policy should be selected through evaluation and implement, bridge the intention to outcomes. Okay, monitor, track the progress and deviations, assess the outcome, evaluate the real impact on beneficiaries and evaluate the policy, measure effectiveness and revise the policies if needed, then design again. Okay, set goals and measure the impact. You can use this again to design the policy into a better policy. Okay, so public policy governed by rules of business under article 77 clause 3. 77 article clause 3 means the president should make rules for more convenient transaction of business of government for allocation among ministries. Okay, so policy making is governed by article 77 clause 3. Policy decisions are made by cabinet, committees, parliamentary committees, ministers and bureaucrats. Okay, policy is shaped both formally and informally. Okay, ये जिनसटा मार्क करो, informally भी policy implement करा जाए, एटा हमें परे देखिवा. So influencing factors of policies are party manifestos, interest groups, pressure groups, the bureaucracy, judiciary, नीति आयोग decision, नीति आयोग surveys. Okay, GST council discussions. Okay, international agencies also they influence public policy. David Easton ताकर policy system black box model means turning demand into policy without clear visibility. एटा कौन हमें देखिवा या परे. Now types of policies and institutional development. Okay, so what are institutions? The institutions, they serve as the fundamental building block of governance and public policy. All right, fundamental building blocks of government and public policy. They create and implement the rules that shape how policies are formulated, implemented and evaluated. Okay, unlike economic growth which may happen spontaneously in private sector, development requires coordinated public intervention, which is where institutions play a vital role. Okay, so private sector जमती मु कहली that their only objective is financial gain. Okay, economic growth. Okay, जो जगार तो जदि इकोनॉमिक ग्रोथ रे इंसेंटिव नथिबो से जगार स्टेट को आसिया पड़िबो. ओके, तो ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. तुमर सोशल जस्टिस हो, तुमर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, तुमर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन केते होजी, दोज आर आल्सो इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट. ओके,
सो ये डिबेटा सब रुहे इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट ओके आ डेवलपमेंट पाई स्टेट इंटरवेंशन बिकम्स नेसेसरी diversity of public policy state intervention become necessary and state intervenes through institutions okay so the diversity of public policies reflects the complexity of governance okay तो again देखिले बहुत रे स्टेक होल्डर्स जेतले आसी जिवे गवर्नेंस भी कॉम्प्लेक्स हो जिवो यार पॉलिसीज डिफर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स टारगेट पॉपुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन इंप्लीमेंटेशन मेकानिज्म ओके तो जत्ते वेरिएबल आसीबो सेते कॉम्प्लेक्सिटी हो गवर्नेंस रे ओके institutional development what are institutions they are long standing okay please note they are long standing किछि अल्प टाइम पाई नुह सेटा बहुत दिन रो अछि long standing social structures norms that shape the interactions and decision making process all right they can be formal institutions like constitutions codes laws or informal institutions like religious institutions or the cultural institutions okay सो इंस्टीट्यूशंस आर लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत दिन अच्छा इंस्टीट्यूशन इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज तांकर सोसाइटी उपर बहुत बड़ इम्पैक्ट रही है ओके दैट इज सेटा होची इंस्टीट्यूशन देन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आर द प्लेयर्स ऑफ द गेम हु ऑपरेट विद इन द ओके इंस्टीट्यूशंस दे डिटरमाइन द रूल्स ऑफ द गेम ओके जमती मुझे कहली तुम लॉन्ग टर्म से लॉन्ग स्टैंडिंग हवा दरकार तो जमती तुम कॉन्स्टिट्यूशन हो कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंस्टीट्यूशन ओके ता भितर तुम सपोज जदि गोटे आरबीआई हो आरबीआई गोटे रेगुलेशन फॉरवर्ड कला दैट रेगुलेशन शुड बी कन्फाइंड विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओके इट शुड नॉट वायोलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओके सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ द गेम ओके इंस्टीट्यूशन प्लेयर ऑफ द गेम फॉर एग्जांपल RBI regulation जोटा मुझे कहली who operate within these rules okay out example judiciary is an institution it sets the rules for justice judiciary overall judiciary गोटे institution while high court किंबा supreme court is an organization functioning under it okay supreme court भी कहले exactly होनी because supreme court is superior to high court is an organization functioning under it so judiciary is the institution that is the judiciary writes the broad determines the broad rules of the game high court is just a player in the game okay high court is an organization so institution और organization भितर एटा difference okay so definition किस देइछन्ती according to Knight institutions are rules that structure social interactions okay they are widely understood and followed by the society so wide rules and institutions are not only involve rules but also internalized values cultural understandings and social behavior okay जमती तुम रिलीजियस टॉलरेंस आमर इंडिया रे बहुत आगुरी अच्छी जिनसटा तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड दैट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वैल्यू ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया ओके सो आई थिंक तुम बुझीपार तो इंस्टीट्यूशन इज द वेरी ब्रॉड वैल्यू वेन डायग्राम देखिए तुम इंस्टीट्यूशन इज ए वेरी ब्रॉड वैल्यू organizations are small bodies that function within the institution all right so characteristics of institutions they are purpose driven every institution created with a specific social legal or economic goal okay तार किसी गोटे गोल थाए structural permanence institutions tend to have long standing rigid framework again long standing so short term हेले तार सेते impact रहिबनी ओके जेहेतु लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेमवर्क तार बहुत दिन रो अछि दैट्स व्हाई सेटा रिजिड भी हो जाय थाए रिजिड फ्रेमवर्क रे भी गराजिव दैट इज द स्ट्रक्चरल परमानेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस यूनिफाइंग फंक्शनैलिटी internal coherence ensures that the institution function as a whole okay so institution they have a functionality of unifying the country or the society okay value oriented सब institution किसी किसी value थिबो the institution reflect the ethical and normative values of the society से society कौन value को follow करची the guide को value से society को guide करची that is determined by institutions okay so this institution organization भीतर देखिले now ता भितर सब देखिए कौन कौन सब अच्छी वैल्यूज ओके डेमोक्रेसी इज ए वैल्यू डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेस पावर बाय गिविंग डिसीजन मेकिंग राइट्स टू सिटीजन थ्रू इलेक्शंस ओके तो डेमोक्रेसी रो गोटे बेसिक वैल्यू जोटा कि तुम मन रखिया कथा डेमोक्रेसी रो कोर वैल्यू इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ओके ह्यूमन डिग्निटी दैट गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस एंड पावर टू द पावरलेस all right that is the
कोर स्पिरिट एंड वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी तो जी सोसाइटी सबुठू खराब अवस्था भी जी अच्छी ताको भी एम्पावरमेंट करा जीवो दैट इज द कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच इज बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी बिकॉज लास्ट मैन स्टैंडिंग को भी जब तुम एम्पावर कर पार देन सबू पर्सन डिग्निटी तुम इनश्योर कर ओके सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेस पावर टू द लास्ट मैन स्टैंडिंग बाय गिविंग डिसीजन मेकिंग राइट्स टू सिटीजन मीन्स ऑल सिटीजन्स irrespective of their status through elections okay aguru democracies they restricted suffrage based on property gender and education criteria that is those are qualified democracies for example france re jenti voting rights were initially only for wealthy males it expanded over decades to include all adult males and eventually women okay but in india we granted universal adult franchise from day one of our constitution of our adoption of constitution okay so this was a revolutionary move despite our widespread poverty illiteracy we believed in the conscience and decision making of the masses decision making capacity of the masses okay so why democracy is vital for institutional development it legitimizes policy making through public consent okay जेहेतु पब्लिक पार्टिसिपेट करके कंसेंट देइछि जे एई लोक ही हमको गवर्न करिवो सो से जे पॉलिसी एबे मेकिंग करिवो दैट देयर अथॉरिटी इज लेजिटिमाइज्ड थ्रू डेमोक्रेसी ओके सेटा को लोक के इलीगल की करिवेनी कि चैलेंज करिवेनी ओके promotes accountability and responsiveness जदि से काम न कर पारला देन तांको पर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबो तो अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट हुए डेमोक्रेसी रे फैसिलिटेट्स इंक्लूसिविटी इन डेवलपमेंट प्रोसेस एज आई हैव सेड डेमोक्रेसी empowers the last man standing that's why facilitates inclusivity and it is the best method for development process overall development okay not just economic development all right so again ये जो जिनस आम इंस्टीट्यूशन वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन देखिले यार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन जस्ट डायग्राम स्ट्रक्चरल परमानेंस एज आई हैव सेड देज आर लॉन्ग लास्टिंग लंबा समय अच्छी दे हैव अगेन बिकॉज दे आर लॉन्ग लास्टिंग देयर फ्रेमवर्क्स आर रिजिड value oriented institutions they reflect the values and normative values of a society unifying functionality they unite the society they have internal coherence that ensures that the institution functions as a whole that they also bind the society purpose driven every institution created with a specific social legal or economic purpose all right evolution of voting rights and I'm already देखिले initially restriction थला early democracies रे qualified democracy qualification on the basis of rights property on the basis of gender education okay and expansion hitla gradually expanded to women india but india adopted universal adult franchise from the beginning only now bureaucracy is professional hierarchical administrative system where officials are appointed on the basis of merit okay pre modern times रे कोन थिला public offices were bought and sold spoil system जेमति तमरो charter act 1833 रे तमरा सिविल कहला जे सिविल सर्विसेज शुड बी ओपन एंड द कंपटीशन शुड बी ओपन बट द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दे अपोज्ड इट एंड दे सेड दैट कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज शुड बी डन बाय ओनली द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ओके तमर चार्टर एक्ट 1853 रे ओपन कंपटीशन इंप्लीमेंट कराला ओके 1833 रे जेमदी नॉमिनेटेड सिविल सर्विसेज ओके माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने जो मैंने नॉमिनेट करेंगे केवल से मैंने ही कम्पीट कर सिविल सर्विसेज में ओके सो प्री मॉडर्न टाइम्स पब्लिक ऑफिसेस आर ब्रॉट एंड सोल्ड पोस्ट 19th century रिफॉर्म्स इन कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड यूएस दे इंट्रोड्यूस्ड मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज ऑल राइट द ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस यूएस पेंडल्टन एक्ट मीन मोस्ट पोजिशंस विद इन द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट शुड बी अवार्डेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल पैट्रोनाइज ओके So, a neutral, competent bureaucracy ensures that effective policy implementation, continuity of policies and fairness in public administration. All right. Now, judiciary acts as the interpreter and guardian of law and the constitution. Okay. Independence of judiciary ensures that executive overreach is checked. It तो जानिच सब challenges to judiciary, political interference in judicial appointment, no infrastructure and procedural delay, need for judicial reforms and digitalization. Okay, and backlog of cases that can be managed through digitalization. So strong judiciary boosts public trust and safeguards constitutional morality. Okay, constitutional morality it is greater than the religious morality or societal morality. Okay, so that can be ensured only if the judiciary is strong. And protection of property rights includes rights related to land, inheritance, contracts and corporate ownership. Protection to private property ensures investment, innovation and economic activity. Okay, private
protection to private property encourages investment, innovation and economic activity. However, excess rigidity in property rights can hinder land reforms and social equity programs. Okay, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी करिया दरकार, एट द सेम टाइम तुम सोशल वेलफेयर की वेलफेयर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करिया दरकार. ओके, सो रिजिडिटी इन एक्सेसिव रिजिडिटी शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड. सो द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स दैट इज द वेलफेयर स्टेट एंड कलेक्ट, ओके, इंडिविजुअल राइट्स दैट इज द night watchman state or the liberty and the collective welfare that is the welfare state is essential in modern property law. Okay, balance between the characteristic of night watchman state and the welfare state should be maintained. Corporate governance. Okay, corporate governance, the corporate governance structures determine how business are controlled and operated. It ensures transparency, accountability and compliance with laws and regulations. Key elements of corporate governance are audit committees, financial disclosure, shareholder rights and independent directors. Effective corporate governance reduces corruption, promotes ethical business practices and protects the investors from long-term losses. Okay, financial institutions like banks, insurance companies, stock exchanges are critical to mobilize savings and investing in development because तुम resources policy implementation time रे तुमको resources दरकार. The financial institutions they perform credit allocation, को सेक्टर को केते क्रेडिट दिया जीवो, risk management in case of risk contingency and capital formation. Okay, capital formation is done by banks. Institutions like RBI, SEBI, NABARD they ensure regulatory oversight and market stability. Okay, social welfare institution they provide services like health, education, employment, social security. Okay, social welfare तो समस्त जो vulnerable section मानक मैंने काम करती. They emerged after mass enfranchisement and welfare state model. Okay, welfare state model मु कहली after mass enfranchisement जतले लोक माने निज को रूल कले तो लोक माने निजर भल पई ही करिवे policies. Okay, so these policies will ultimately lead to social welfare of the larger masses. Okay, जेमती PDS in India, social insurance. Okay, MG नरेगा एज एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी नेट. ओके, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट SIRD भुवनेश्वर जोटा अच्छी. ओके, सो these social welfare institutions they reduce inequality, promote inclusion and uphold the idea of social justice. Okay, social justice because not everybody starts from the same pedestal. You have to give some incentives or some positive discrimination to enable everyone to have equality of opportunity. Okay, so social welfare institutions manakara this is the role. Okay, so एवटा सब types of institutions ऊपर देले. So institutions for social development. Okay, as you have seen, financial institution credit allocate करती, risk manage करती, bureaucracy merit based and they have role in policy implementation. Judiciary must be independent and judicial reforms. Okay, is the need of the hour. Social welfare institutions they work to achieve the objective of health and social security, property rights, investment and social equality, the night watchman state and welfare state, democracy, citizen participation, the voice to the voiceless and power to the powerless, and it also leads to accountability and responsibility of the elected representative. Corporate governance transparency रहे दरकार, compliance रहे दरकार. Okay, so these are the institutions for social development as we have seen. Now principles for institutional and organizational development. What are the outcome the focus on? Institutions must identify the measurable outcomes, that is the economic growth outcome, literacy level outcome, poverty reduction outcome. Okay, time frame sensitivity, all reforms should require phased implementation to accommodate adjustment. Okay, the phased implementation, contextual relevance, every policy must respect the socio-political and cultural realities of that area. This is very important. In the context in the caste, religion, gender, economy, region. Okay, one size fits all, size should not be adopted. Contextual relevance kale tamar policy successful hobo. Okay, participatory governance ensures legitimacy kon mu कहली and sustainability. Okay, जदि people involved न हेबे तो जहाँ भी तुम रिफॉर्म करिवो सेटा से माने निजर भाबिबेनी, निजर न भाबिले से मेंटेन करिवोनी, मेंटेन न कले सेटा सस्टेनेबल हेई परिबोनी. Okay, stakeholders should include NGO, media, trade unions and cooperatives. Okay, types of institutional development गोटे intervention based and history based. Intervention based means reforms or policy changes introduced deliberately. Okay, एटा में जानी सुनी कलु to because that was the need of the hour. Okay, for example the LPG reforms, that was the need of the hour, so we introduced it deliberately. History based institutions shaped by colonialism. Okay, so by social movements and revolutions. For example the parliamentary form of government as we have adopted in India, that
institution is history based, okay, and LPG reform policy is intervention based, okay. Effective institutional development requires synergy between state, market, and civil society, okay. These three stakeholders should have a harmonious relationship, okay, so that effective institutional development can occur in the country, okay. Types of policies, then types of policy, এটা बहुत important तमरो क्वेश्चन आछि एथिरु. First is distributive policy. Distributive policy allocates resources or benefits to the specific groups, okay. Distribution करा जिवो केवल specific section of society रे, okay. No direct cost to other sections, okay. Please note, no direct cost. Indirect cost सब बेले रहिबो, okay. जदि किछि बहुत गोटे जिनस सोशल वेलफेयर जिनस जदि फ्री रे दे दिया गला तो that cost will be we procured from the future generations, okay. एटा इकोनॉमिक्स तुम पढिछ. So direct cost distributive policy रे हेबनी, but indirect cost रहिबो, okay. For example, farmer को subsidy, public scholarship, free midday meals, okay. These are distributive policy aimed at particular groups, okay. These are often politically popular and easier to implement, okay. तो एटा तमरो OCS 2023 रे क्वेश्चन पचारथला, which of the following is correct with respect to distributive public policy. It is also called patronage policy. That is true. Patronage, patron माने one who supports you, okay. That is patronage. So distributive policy रे government supports the vulnerable sections, okay. Government acts as a patron to the vulnerable sections, so it can be called patronage policy. Meant for specific segments of society, yes, एटा में देखिलु. Allocates resources to specific groups only, that is true. समस्त की दिया जीवानी जो माने डिजर्विंग केवल सेमानु दिया जीवो. Concerned with regulation and control of goods and services, this is not true, because एतरे किछि कंट्रोल की रेगुलेशन करा जाउनी. एतरे जो माने डिजर्विंग केवल सेमानु दिया होचंती, दिया जाउची goods and services. जो माने पाउनांती, if they want they can buy it from the market, okay. It requires little administrative discretion, that is also true. Easier to implement as it is written, because just policy तैयार होला एमानु दिया जीवो तो will distribute it, okay. एतरे बेसी बहुत किछि भाबिया पड़ेनी सेतरे, okay. It requires, because they are populist policies, एतरे बेसी किछि administration रे बेसी किछि thinking करा जायनी, means brainstorming करा जायनी, okay. Requires little administrative discussion, that is also true. Answer is 1, 2 and 4. 3 is not true. Distributive policy, redistributive policy aims to restructure inequality by transferring resources, that is true. This is often controversial as they create winners and losers, okay. तो मैं distributive रे देखिला direct cost नहीं अलगा section of society ऊपर, but redistributive policy रे direct cost आसीबो, okay. They create winners and losers, and they direct cost केमिति आसीबो. For example, income tax on rich and used for welfare schemes, okay. तो income rich ऊपर income tax directly पड़िला, okay. Direct cost आसुची. Land distribution programs, redistribution programs, तो जी already owner excess land अच्छी ताठु नहीं कि आउ काकु दिए जो, तो जी already owner अच्छी ता ऊपर cost पड़िबो. Reservation in education and jobs, okay. They directly affect the general candidate, okay. So direct cost रही redistributive policy रे, okay. Distributive policy रे direct cost नहीं, that is aimed at specific groups. Redistributive policy is also aimed at specific groups, okay. Not everyone, aimed at specific group, okay. But एथरे direct cost पड़िबो तमरो अलगा सेक्शन ऊपर, okay. Distributive policy रे indirect cost पड़िबो, okay. So redistributive policy requires strong political will and effective communication, okay. Effective communication and strong political will, because तमरो effective तम values of preamble ले तमरो जेमती social justice को बहुत high value दिया है, because social justice न हेले तमरो इकोनॉमी जदि समस्ते, because everyone is not same, जदि समस्ते discriminated लोगों को vulnerable लोगों को जदि तमे ignore कर दबो, then से माने तले रही जिवे. जो माने already powerful, already privileged, से माने ऊपर पळेबे. सेमान जदि ऊपर पळेले देन सोसाइटी रे इनइक्वालिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रहिबो, ओके. जदि सोसाइटी रे इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन रहिबो देन इकोनॉमिक ग्रोथ भी हेई परिबोनी. इकोनॉमिक ग्रोथ न हेले तमर ट्रू सेंस रे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आस परिबोनी, ओके. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी न आसले तमर इंडिविजुअल मान भीतर जतले इनइक्वालिटी रहिबो तमर फ्रैटर्निटी रहिबोनी. फ्रैटर्निटी रहिबोनी, इंडिविजुअल डिग्निटी रहिबोनी. इंडिविजुअल डिग्निटी फ्रैटर्निटी न रहिले तमर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कैन आल्सो बी एट स्टेक, ओके. सो ये सब जिनस गुड़ा को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करवा दरकार, एंड इट नीड्स स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल दैट जो मानठू कॉस्ट पड़ुची, ओके. जो मानठू डायरेक्ट कॉस्ट निया होची से माने बुझिया दरकार जे एटा निया होची सो दैट ओवरऑल कंट्री रा बेनिफिट पाए, ओके. सो दैट नीड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन. रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज,
they provide social protection, this health, pension, housing, okay, social protection to vulnerable groups, key to achieving UN sustainable development goals, okay. They promote equality, human rights and social harmony. So core principles are equality, equal opportunity, basic needs को fulfill करा जीवो, civil और political rights को fulfill करा जीवो, okay. So social welfare policies can also be equated with redistributive policies, okay. So they can also be equated with redistributive policies, social policies. Now comes substantive policy. Substantive policy पर question पचारची. It focus on general governance, okay. General governance like law, economy, environment, education, okay. So these are general governance means substantial issues. Okay, substantial issues এটা ସମସ୍ତଙ୍କୁ affect କରିବ, okay. It affects everyone, affects all. So these are based on constitutional ideas, social demands and economic priorities, all right. कन्स्टिट्यूशनल कौन आइडियाल अच्छी, सोसाइटी रे कौन डिमांड अच्छे, इकोनॉमिक्स प्रायोरिटी कौन अच्छी, अकॉर्डिंगली सब्सटेंशियल इश्यूज, सब्सटेंशियल पब्लिक पॉलिसी को निया जाए. लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी. एजुकेशन पॉलिसी विल अफेक्ट एवरीवन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी विल अफेक्ट एवरीवन, ग्रीन एनर्जी मिशन समस्त अफेक्ट करियो ब्रॉड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को. तो OCS 2023 क्वेश्चन आसला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. सब्सटेंशियल पब्लिक पॉलिसी आर दोज व्हिच, ओके, प्लान एंड प्रोग्राम टू गेट थिंग्स डन, ओके. जदि ए स्टेटमेंट आसला, ए स्टेटमेंटा सबू पब्लिक पॉलिसी ट्रू. सबू पॉलिसी रे किसी गोटे प्लान और प्रोग्राम कराऊँगी, टू प्लान कराऊँगी और प्रोग्राम दिखाऊँगी केमिति जिनस करा जीवो, ओके. सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी पब्लिक पॉलिसी. एंड दे substantial public policies allocate resources services to particular segments of larger society. एटा मु कहली समस्त अफेक्ट करिवो. सो 2 इज रॉन्ग. एटा डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी रो स्टेटमेंटा को सेठी दे देजी. डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी इज मेंट फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, ओके. सो सेटा एटा सेठी पके देजी. सो दिस इज 2 इज रॉन्ग. दे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स और कॉस्ट टू सिटीजन्स, ओके. सो दैट इज ट्रू. एटा मुझे कहली तो जहाँ भी बेनिफिट है कि जो से पॉलिसी जहाँ भी बेनिफिट है कि कॉस्ट है सब सिटीजन मान अफेक्ट कर, ओके. दे इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन बिहेवियर, ओके. एटा आम एबे देखिबा. रेगुलेटरी पॉलिसी दे सेट लीगल और प्रोसीजर लिमिट ऑन बिहेवियर, ओके. रेगुलेटरी पॉलिसी फीचरटा सब्सटेंसिव पॉलिसी फीचर नुह. सब्सटेंसिव पॉलिसी इज रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करानी. सी एक्चुअली कोई सब्सटेंसिव पॉलिसी रे कह जाए कौन कौन करिवो, ओके. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रे एई जिनस सब करा जीवो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे एई जिनस सब करा जीवो. रेगुलेटरी पॉलिसी रे कौन करा जीवो, आरबीआई किछि रेगुलेट करिवो, एई जिनस गुडा तमे करि पारिबो नाही. सेबी भी कहबो स्टॉक मार्केट रेगुलेशन पई एई जिनस गुडा तमे कर पारिबो नाही, ओके. तमरा एक्सिम बैंक भी एई जिनस गुडा तमे कर पारिबो नाही, ओके. सो रेगुलेटरी पॉलिसीज आर नेगेटिव इन नेचर, okay. Substantive policies, they are usually positive in nature, okay. So this is 4 is statement of regulatory policy. तो 4 हबनी, 1 and 4 तो हबनी. at particular segment एटा भी नुह, तो 2 भी नुह, 3 is the answer, okay. They directly distribute benefit and cost for citizens, that is substantive public policy. Regulatory policy, the legal or procedure limit on behavior enforced by autonomous bodies like RBI banking regulation pai, TRAI for telecom regulation, SEBI for capital markets, okay. They maintain standards, safety and fair competition among stakeholders, okay. So yankara negative in nature, their directories are negative in nature. Constituent policy, they deal with institution building or reforms, for example niti agro creation, okay. तो गोटे इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने कौन कौन पॉलिसी सबू से दैट इज डील्ड विथ बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसीज. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग कमिशन, फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ओके. सो दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसीज. दे इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ऊपर, दे डील विथ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. दे आर इंपोर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड मॉडर्नाइजेशन. कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, दे इन्वॉल्व फिजिकल सपोर्ट टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक एंटरप्राइजेस, ओके. सो fiscal support, they indirectly benefit citizen by improving infrastructure, all right. So capitalism, the fiscal support jaako diya jibo. Grant in aid, article 275, central funds to PSU, viability gap funding for public private partnerships, okay. So these are elements of capitalization policy. It deals with economics mostly, okay. So types of policies sarla. Now meaning and nature of utility of policy science, okay. Policy science upare eta dekhiya. So what is policy science? It is a modern multidisciplinary field that aims to address complex social challenges through informed, rational and structured decision making, okay. It evolved from public policy aimed not only to understand how policies are made but also how to improve them through scientific tools, okay. ए जिनसटा ए साइकिल ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑलरेडी आम देखी सारी.
According to Brooks, public policy science provides an independent vantage point. Independent vantage point that is free from political bias and emotional impulses. Okay, तो तुम गोटे rationally आउ independently केमी तुम गोटे analyze करिवो policy को. So that is dealt with by policy science. Okay, to give a rational decision. It combines theoretical knowledge and applied problem solving to improve governance and social outcomes. All right, that is policy science. Policy science, this concept was first coined by Harold Laswell. ये जिनटा मन रखियो एटा मे भी पचार दे पारे. The term policy science was coined by the political scientist Harold Laswell. Okay, post World War II. Okay, so तो कौन वर्ल्ड वार टू पर कौन है तुम वर्ल्ड वार टू पर सबू डिस्ट्रक्शन हो जाता तो तापर वर्ल्ड वार टू पर सबू आकाडेमिशियंस मान को डका होता तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रू पॉलिटिकल साइंस रू ज्योग्राफी रू सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इकोनॉमिक्स सबुआड़ू एक्सपर्ट मान को डका जे एबे ଏବେ सोसाइटी बिल्डिंग बहुत गुड़े चैलेंज तो तुम आकाडेमिक फील्ड रे कौन कौन तुम कंट्रीब्यूट कर आसिक कंट्रीब्यूट कर. ओके, सो तो देयर वाज ए नीड फॉर न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन टू एड्रेस मॉडर्न गवर्नेंस इश्यूज लाइक वार पॉवर्टी इनइक्वालिटी इकोनॉमिक रेगुलेशन. ओके, या आगुरी सबू नेशन इंडिपेंडेंटली निज निजर दे ऑपरेटेड इन साइलोज आउ निजे निजे एमती साइलोज ऑपरेट कला करने से वर्ल्ड वार कले. ओके, वर्ल्ड वार कले टू बिकज दे फोकस्ड ऑन देयर नारो बेनिफिट. ओके, निज निज भावुले एवं समझते भाविले मिसिकी केमती सोसाइटी को ग्रो करवा. ओके, तो मिसिकी सोसाइटी ग्रो कलापर बहुत स्टेक होल्डर्स आसवे तो से नुआ नुआ बहुत गुटे लोक स्टेक होल्डर आसापी बहुत गुटे नॉलेज फील्ड सिंथेसिस दरकार. ओके, तो देयर वाज ए नीड फॉर ए न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन टू एड्रेस द मॉडर्न गवर्नेंस इश्यूज. Okay, so his ideas they combined empirical research with value analysis and future forecasting. Okay, so सबू field of studies रू experts आने की से गोटे study तैयारी कले. So that is the birth of public policy or policy sciences. Okay, Harold Laswell. और Laswell रो की observation जो आमे जो पॉलिसी तैयारी करवा जो नुआ साइंटिफिक डिसिप्लिन करवा दैट शुड बी इनफॉरमेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग. ओके, दैट पॉलिसी शुड बी ग्राउंडेड इन एक्सटेंसिव डाटा एंड रिसर्च. इट शुड ब्रिज रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स एकेडमिशियंस एंड प्रैक्टिशनर्स मस्ट कोलाबरेट. ओके, एकेडमिशियंस सबू फील्ड दे शुड एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ ऑल फील्ड दे मस्ट कोलाबरेट. ओके, सो दैट एकेडमिक रिसर्च फील्ड एप्लिकेशन हो पार. Past, present and future continuum decision making should be forward looking, informed by historical and present context. Value integration, policy science must address ethics, logic and public values, not just efficiency or cost. Okay, efficiency or cost means only economic development nuha, tamara development should include everything, economics, tamara inclusion, social justice, environment justice, everything. Okay, and the ethics, okay, ethics also. Okay, not that not the utilitarian ethics. Okay, so development construct theories and models help us stimulate the outcomes, clarify our goals and forecast changes. Okay, so but despite his path-breaking ideal, the field was slow to develop due to dominance of traditional political science and economics. Okay, traditional subject जो मैंने सब थिले तांकर dominance सेमती रहिला तांकर हारोल्ड लासवेल कर जो वैल्यू को एते इंपोर्टेंस दिया ही नथला. ओके, सो देन तापर धीरे धीरे पब्लिक पॉलिसी डेवलप कला. सो characteristics of public science as per Michael Moran. Okay, problem oriented approach, focus is on solving real world problems, not abstract theories. Okay, जेमती आमे देखिले, so जेमती आमे देखिले, so academics and practitioners must collaborate. Okay, abstract theory making नुह तमरा आसी के real world problems को solve करिया दरकार. For example, climate policy isn't not just studied academically, it is addressed in real world also. Multidisciplinary, okay, draws from many subjects, political science, economics, sociology, philosophy, anthropology, management. Okay, सबुआडू एक्सपर्ट आसवे इनपुट देवे so that भल से गोटे होलिस्टिक वे रे सोसाइटी को डेवलप करी हबो. आफ्टर वर्ल्ड वार रियल प्रोब्लेम लाइक पॉवर्टी एजुकेशन हेल्थ दे रिक्वायर इनपुट फ्रॉम मल्टीपल फील्ड्स. ओके, वैल्यू ओरिएंटेड, it recognizes that policies reflect social values like policy should reflect social values like justice, equality, human dignity. These values are accepted in every society despite of their history, culture, jaha bhi ho. These values are accepted in every society, so they should be recognized in public policy. So policy science does not pretend to be value neutral. Okay, it embraces ethical complexity. Okay, तो value neutral माने से माने एमिति कहबोनी जे एई सोसाइटी रे जदी ए वैल्यू को सोसाइटी रे को वैल्यू को केमती कोन निया जीवो. ओके, सेथरे इंडिफरेंट रहबो नाही,
पब्लिक पॉलिसी माने से सब कंटेक्स्ट को नब ओके एंड इट बिकज जिते कंटेक्स्ट अधिका नब सेते वेरियस डिफरेंट भैल्यूज आसो जिते भैल्यू डिफरेंट आसो एथिकल कम्प्लेक्सिटी सेते आसो ओके सो से कम्प्लेक्सिटी भी एडमिट तो काउंट करे पॉलिसी साइंस ओके इट शुड बी वैल्यू ओरिएंटेड नॉट वैल्यू इंडिफरेंट ओके so these three pillars form the core DNA of policy sciences, that is the real problem, multidisciplinary tool plus value based reasoning okay so in tinta maybe question as per pillars of policy science, real problem solving approach, multidisciplinary nature and value oriented okay values justice, equality, liberty okay these values should be taken into account while designing a public policy so phases of public policy process, policy making not a single decision but cyclical multi-stage process already हमें देखी जो ये idea टा आगुरु 6 key phases are initiation, problem is recognized and conceptualized, stakeholders brainstorm the possible policy direction okay first problem को identify करा ला then estimate, analyze the cost benefit and risk of solution, models use करो, forecast data use करो, selection, decision makers choose the preferred option based on analysis and feasibility, implementation, bureaucratic machinery enforces the policy through rules, programs and institutions, modification if any needed, if the policy is outdated or failed it is ended or altered, often neglected in India but it is crucial for policy dynamism okay तो एक्जाक्टली यही जिनटा को तुम ऑलरेडी पब्लिक पॉलिसी जो साइकिल अच्छी तुम एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तुम पढ़ी तो ये जिनटा को तुम भलसे बुझीपर जमी तुम सब स्टेप अच्छी स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, कलेक्ट बेस लाइन डाटा तापर तुम इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, मिटिगेशन एंड ये रिपोर्ट, पब्लिक हियरिंग, डिसीजन मेकिंग ओके मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान्स तापर अल्टरनेटिव जदि किसी आसेस कर रिस्क मैनेजमेंट कर ओके सो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ही तुम फास्ट जमती स्क्रीनिंग ओके इनिशियल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर कन्सेप्चुअलाइज कर स्कोपिंग एस्टिमेशन कर देन एस्टिमेशन तुम बेसलाइन डाटा धर इम्पैक्ट कौन अच्छी प्रेडिक्शन कर ओके देन सिलेक्शन ऑफ द पॉलिसी को पाथटा तुम सिलेक्ट कल तार अल्टरनेटिव जदि किसी अच्छी आसेस द अल्टरनेटिव ओके देन पब्लिक हियरिंग कर देन इम्प्लीमेंट कर ओके तापर तुम रिस्क असेसमेंट और पॉलिसी फीडबैक नहीं कि तुम चाहिए मॉडिफिकेशन कर पारियो सो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ए पॉलिसी दिस एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इज ए वेरी वेल डिजाइंड पब्लिक पॉलिसी ओके दैट वी कैन से तो फेजेस ऑफ पॉलिसी ओके एटा फास्ट इनिशिएशन प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर कन्सेप्चुअलाइज कर स्टेक होल्डर शुड ब्रेनस्टॉर्म द पॉसिबल पॉलिसी डायरेक्शन एस्टिमेशन एनालाइज कॉस्ट बेनिफिट एंड रिस्क टू डिफरेंट सॉल्यूशंस मॉडल फोरकास्ट एंड डाटा सिलेक्शन ऑफ व्हिच पॉलिसी वी शुड टेक decision makers should choose a preferred option based on analysis then implementation bureaucratic machinery enforcement through policy rules and programs then modification if needed so these phases they allow refinement correction and learning making public policy making a living process okay living and dynamic process not a rigid process so features of policy sciences interdisciplinary as I have said it blends social sciences natural sciences and applied fields like engineering, statistics and systems analysis, decision oriented, focuses on how to make better decisions rather than just describing structures okay so decision making, practical decision making, which one is more optimal will provide more optimal results that decisions should be taken, use of analytical tools like cost benefit analysis, simulation, forecasting, systems modeling okay instrumental normative okay instrumental normative तो normative कौन normative means what should be done what ought to be okay कौन हबा कथा that is the norm that is normative approach okay तार opposite होची empirical approach that is what is एबे कौन अच्छी not what is okay एबे कौन अच्छी that is the empirical approach आ कौन हबा कथा that is the normative approach okay एडा में देखियो परे so instrumental normative deals with the instruments को instruments use करके आमे अचीव कर पारिबो कौन हबा कथा हमर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव एया अछि तो को इंस्ट्रूमेंट यूज करके आमे पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जोटा कि कौन हबा कथा सेटा अचीव करिबा that is the deals with the instruments and goals okay not absolute moral values okay कौन हबा कथा सेटा को इम्प्लीमेंट करने कौन इंस्ट्रूमेंट यूज करिया कथा मेटा पॉलिसी फोकस ओके मेटा पॉलिसी मीन्स बियॉन्ड पॉलिसी हम पॉलिसी तो होउची बट एंटायर पॉलिसी मेकिंग को पूरा सेपरेट होगी देखिए दैट इज द मेटा पॉलिसी मीन्स बियॉन्ड पॉलिसी सो इट स्टडीज द पॉलिसी अबाउट पॉलिसी मेकिंग ओके पॉलिसी मेकिंग तो कराउची तो सेटा केमिति कराउची दैट इज डील्ड विथ बाय मेटा पॉलिसी
like how institutions frame policy, how bureaucracies behave to policies, how feedback loops operate. Okay, these are meta policy focus. Okay, for example, studying how education policy is created in India versus how it should be improved using data and social impact tools. Okay, normative normative thing, what ought to be done, and meta policy, how education policy is created in India. All right, so these are all about features of policy science. Now, paradigm of policy science. Paradigm, what is paradigm? Paradigm is a perspective or a set of ideas. It is a way of looking at something. Okay, way of looking at something. Okay, what is the paradigm of political science? According to HKL Drawer. Okay, HKL Drawer is an important scholar, as I have already said. Drawer has emphasized the theoretical backbone of political science. His paradigmatic contributions include understand and improve the policy making. Okay, go beyond studying what is empirical ଜିନିଷ, what is, focus on improving what ought to be, normative ଜିନିଷ. ଓକେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେଟ୍ କର, ମୋତେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ଅଛ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ସେଠି ରହିଯାଉନି, ତୁମେ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କର, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ. ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଟ୍ ଟୁ ବି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଆଇଡ଼ିଆଲ୍. ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍, ଏବେ ତୁମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଏବେ ତୁମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ. ଓକେ, so he has said you should understand and improve policy making. So, for example, suggesting reforms to Niti Aayog or Planning Commission, cross-disciplinary integration. Okay, break traditional silos, integrate decision sciences, systems theory, economics, and law. Okay, balance between theory and application, grounded in scientific evidence, yet committed to real-world changes. Okay, promote practical training of policy professionals. Okay, accept tacit knowledge. Tacit knowledge means not explicit. Tacit means not explicit, means tacit means understood and it is understood or implied without being said. Okay, जोटा tacit knowledge, implicit knowledge. Okay, तो real world knowledge experience धर, common sense, तमर contextual wisdom आर valid sources of knowledge. Okay, तो गोटे तुम थियोरी कला बेलू तुम मे भी होई थाई पारे तुम बहुत गुड़े जिनस मिस कर दे पार पॉलिसी नेवा पूर्व. ओके, तो इम्प्लिसिट जदि किसी डिसीजन को इंक्लूड कराई पार देन एक्सेप्ट दैट नॉलेज. ओके, फ्रॉम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, कॉमन सेंस एंड कॉन्टेक्चुअल विजडम. Time continuity, present, past, future are interlinked. Policy must be historically informed and future ready. Okay, data driven decision making. Policy professionalism, train the analysts who act as policy surgeons to diagnose the problems and offer treatments. Okay, policy, so we should have trained professionals. Rational and systematic design, emphasize data driven decision making, feedback loops and organizational design. Okay, these are important for policy making, policy science. Nature, scope and utility. Nature is applied and practical discipline, holistic and value aware, strategic and future oriented. Scope encompasses all stages of public policy from agenda setting to evaluation, applies to sectors like health, education, law, economy, environment, defense, engages all government and non-state actors, think tanks, NGOs, citizen. Okay, utility, it helps government make better decision in uncertain and complex environment. Okay, जेहेतु सब decision को account for करा है जी, सब stakeholder की सब factor को account करा है जी, then it will be obviously lead to better decision. Creates professional expertise in managing public problems, strengthens democracy, promoting transparency and rationality, contributes to accountability, responsiveness and efficiency. Okay, so draws paradigm of policy sciences. एटा मन रखिदेव. ओके, so first understand the policy system, cross disciplinary action integration करो, balance between theory and application, accept tacit knowledge, time continuity, सब factors, historical factors को consider करो, professional policy makers, then rationally system को design करो. Okay, so this is the drawers paradigm of policy science. Okay, now the last chapter for today. Okay, chapter 4, policy analysis. Okay, just a second. So in modern governance, policy problems are increasingly complex, multidimensional and dynamic, as I have said, with the evolution of welfare state. तो तुम्हारा complexity बढ़ुची. Policy analysis has emerged as a systematic evidence-based tool to understand, evaluate and improve policy decision. Okay. Focus is on identifying what works, what doesn't work and how to improve governance outcome through data and rational planning. It is not just academic, it is practical function performed in think tanks, ministries and planning bodies and international agencies. So public policy is a scientific study. Okay, policy analysis it a scientific study bhabe evolve karlani. Okay, with the growing objective of the state being a welfare state and the growing multitude of
demands from the state. So public policy has evolved to be a specialized field of its own. Okay, specialized discipline of its own. Policy analysis, it is the systematic study of the content, process and impact of public policy under analytical tools and data. Aim is to answer what is the problem, what are the available solution, which option is the most effective and feasible. According to William Dunn, policy analysis is applied social science which uses multiple methods of inquiry and argument to produce and transform policy relevant information. Okay, so nature of policy analysis: goal oriented, focus on improving governance outcome; evidence based, relies on data, research, logic, forecasting. Okay, problem solving, to frame, understand and resolve real world issues; iterative, it is cyclical, policies must be revised and re-evaluated. Okay, cyclical, तुमर इम्प्लीमेंट कर फीडबैक नब पुणी इम्प्रूवमेंट कर ओके ये जिनटा चलती सब बेले. सो वैल्यू सेंसिटिव, इट मस्ट कंसीडर एफिशिएंसी, इक्विटी एंड जस्टिस. ओके, तुम जस्टिस की इक्वालिटीर भैल्यूज गुड़ा को केवल इग्नोर करके तुम खाली एफिशिएंसी देखिपार. सो हाउ टू कंडक्ट पॉलिसी एनालिसिस, अगेन एटा आम ऑलरेडी बहुत थोड़ा देख सारी. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, scope, nature of the issue. For example, malnutrition in children, is it due to poverty or is it due to awareness? Okay, malnutrition means it includes both undernutrition and overnutrition. Okay, जदि बहुत बहुत जगह छोट छुआ को बहुत खाया देकी माने ओबेसिटी आड़ को पढ़ाती बट सेटा को हेल्दी भाव कनसीडर करा जाए. सो दैट इज ड्यू टू दिस, हेटा भी गोटे प्रकार malnutrition and that is due to lack of awareness. Okay, malnutrition in children whether due to poverty, awareness, lack of awareness or service delivery. Setting objectives, define what the policy should achieve, like reducing child malnutrition by 40% in 3 years. Okay, these are the objective. Identify the alternatives, consider multiple solutions. Okay, midday meal, cash transfer, nutrition awareness. Policy alternatives, cost benefit analysis करो, risk assessment करो, stakeholder impact matrix देखो. Okay, evaluate each option for feasibility, efficiency and equity. Selecting the preferred policy, choose the most viable and most optimal public policy and acceptable option. Implement, plan how the policy will be executed, who will do what, when and how. Monitor and evaluation, establish indicators and feedback system to track progress and modify if needed. Okay, role of research, research is the backbone. It includes both qualitative research and quantitative research. Okay, qualitative research in like interview, focus groups and case studies. Quantitative देखो, qualitative रे तमरा numerical किसी yardstick दिया ही हुएनी. Okay, quantitative रे quantity तुमको numerical value दिया जाए. सर्वे करा जीवो केते suppose employment तमरा number of working hours हो, तमरा econometrics is the economics branch जो थे कि statistical methods are used to analyze economic data and quantify the economic phenomena and test the economic theories. Okay, econometrics, statistics. Okay, जो थे numbers involve हो that is quantitative methods. जो थे number मानकर involvement इतना नहीं, values मानकर involvement अच्छी that is qualitative methods like case studies, focus groups, questionnaire on interviews. Okay, so types of research in policy analysis. The research types of research, basic research is understand the phenomena like poverty cause कौन अच्छी. Applied research is finding solution to the policy problem like evaluate the PDS for efficiency. Evaluation research, post implementation assessment of policy effectiveness. Okay, तुम implement कला पर कौन सब evaluation कल. Okay, research ensures that policies are not driven by ideology alone but by evidence and reality and they are not obsolete. Okay, they are up to date with change in time. That is ensured by research. Okay, policy analysis एटा तुम जानिच, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर, ऑब्जेक्टिव सेट कर, अल्टरनेटिव जदि किसी अच्छी एनालाइज एवरी अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्टिमल पॉलिसी, इम्प्लीमेंट केमती करिवो ता स्ट्रैटेजी एंड जहाँ इम्प्लीमेंट कल तार फीडबैक देखिकी ताको मॉनिटर इवैल्यूएट कर, देन ताको पुणी इम्प्रूवमेंट कर. तुम जदि किसी पॉलिसी प्रॉब्लम अच्छी पुणी तुम पॉलिसी रे ताको आहुरी इम्प्रूव कर. सो अप्रोचेस पॉलिसी एनालिसिस बहुत गुड़ा फिलोसॉफिकल मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क अच्छी. नॉर्मेटिव वर्सेस एम्पिरिकल, एज आई हैव ऑलरेडी सेड. नॉर्मेटिव मीन्स व्हाट ऑट टू बी, कौन हवा कथा, व्हाट ऑट टू बी. इट इज वैल्यू बेस्ड, इट इज एथिकल, कौन हवा कथा, कौन अचीव करिया कथा. किंतु एम्पिरिकल इज व्हाट इज, एबे पर्यंत कौन होईची. फैक्ट बेस्ड डाटा ड्रिवेन, बिकज एटा को फैक्ट बेस्ड डाटा ड्रिवेन कहीं करियो बिकज एबे पर्यंत कौन होईची दैट कैन बी इजिली क्वांटिफाइड. कौन हवा कथा सेटा को क्वांटिफाई करी हबनी. ओके, गोटे टार्गेट देई हबो बट क्वांटिफाई करिवाटा डिफिकल्ट. सो नॉर्मेटिव जिनस गुड़ा को क्वांटिफाई करा जाएनी. ओके, फॉर एग्जांपल जमती पीएम सूर्य घर योजना रे एतिकी नंबर ऑफ सोलर पैनल्स आम रूफटॉप सोलर पैनल लगेबू बट दैट इज ए सेटा व्हाट ऑट टू बी बट सेटा हेई पारला कि बट हेई पारलानी ना. तो दैट इज एम्पिरिकल थिंग इज फार रिमोव्ड. व्हाट इज फार रिमोव्ड फ्रॉम व्हाट ऑट टू बी.
That is the eternal dilemma of human life. Okay, deductive versus inductive. Deductive theory from general theory to specific cases. Okay, general theory means deductive approach माने तमरो आगे general theory कहिदबो that जेमति all planets revolve around the sun. So तब specific earth को केमति आसीबो, earth is also a planet, so earth must revolve around the sun. Okay, तो general रू specific. Inductive approach means बहुत गोटे specific observation देखि गोटे broad generalize जिनस को तुम अराइव कर जमी सपोज पेन फॉल्स टू द ग्राउंड, एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड, एरोप्लेन फॉल्स टू द ग्राउंड, ओके, ए बर्ड फॉल्स टू द ग्राउंड, दैट मीन्स एवरीथिंग फॉल्स टू द ग्राउंड, एवरीथिंग फॉल्स टू द ग्राउंड, तो गोटे ग्राविटी बोली किसी गोटे जिनस अच्छी. ओके, दैट इज स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रु जनरलाइज ब्रॉड जनरलाइज को गल. ओके, डिडक्टिव अप्रोच तुम जनरलाइज थ्योरी ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, इफ अर्थ इज ए प्लैनेट इट मस्ट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड सन. जनरलाइज थ्योरी रू तुम अर्थ को गल. ओके, सो दैट इज डिडक्टिव अप्रोच. क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव तुम ऑलरेडी कहली. क्वालिटेटिव इज इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ओके, ह्यूमन बिहेवियर को क्वांटिफाई करवा बहुत कष्ट. ओके, गोटे ह्यूमन केते ऑनेस्ट, केते ट्रुथफुल, ओके, यही जिनस गुड़ा को क्वांटिफाई गोटे नंबर रे क्वांटिफाई करवा बहुत डिफिकल्ट. ओके, सो जनरली गुड़ा क्वालिटेटिव अप्रोच गुड़ा को क्वांटिफाई करवा डिफिकल्ट. ओके, सो ताकू नंबर्स रे बुझाटा कष्ट. ओके, क्वांटिटेटिव मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, रिग्रेशन, सिमुलेशन, मॉडल्स, ओके, दे आर इजियर टू क्वांटिफाई. ओके, एटा को नंबर रे रिप्रेजेंट करि हबो. ओके, दैट इज क्वांटिटेटिव थिंग्स. क्वालिटेटिव थिंग्स दे आर हार्ड टू रिप्रेजेंट इन नंबर्स. ऑल द इंटरव्यू टाइम रे तुमरो ए जिनस भी करा जाए. क्वालिटेटिव जिनस गुड़ा को नंबर रे मेजर करा जाए, बट दैट इज अगेन वेरी हार्ड टू डू. ओके, वेरी डिफिकल्ट टू डू. So political versus managerial. Political focus on stakeholder power, negotiation, conflicts. Okay, political managerial focus on administrative feasibility and implementation capacity. Okay, these are managerial issues. Political issues is deals with power, negotiation and conflict. Okay, so analysis of public policy is a blend of multiple approaches for holistic understanding of the public policy. All right, so forms of analysis, eta may be pachar dei pare. Public policy analysis is not monolithic. It comes in various forms like prospective analysis, ex ante means done before policy is implemented. Policy implement hava purburu analysis kara jibo, like used for planning, designing and anticipation. For example, forecast pollution impact on a new industrial project. Okay, तो policy already implement हैनी, but we are forecasting. Okay, जोटा कि तम environment impact assessment रे भी हुए. Okay, retrospective analysis done after implementation. Okay, focus on outcome, impact and cost effectiveness. Okay, स्वच्छ भारत मिशन हो गला, तापर कौन पॉलिसी से पॉलिसी रो कौन इम्पैक्ट है, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मीन्स लॉन्ग टर्म बिग पिक्चर प्लानिंग, बर्ड्स आई व्यू. ओके, नेशनल एनर्जी पॉलिसी 2047 वेरी लॉन्ग टाइम. तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मीन्स तुम लॉन्ग टर्म व्यू कौन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव हम, दैट इज डील्स विथ दैट. टैक्टिकल और ऑपरेशनल एनालिसिस मीन्स शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल डिसीजन. ओके, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो वैक्सीन देवाई फॉर द टाइम बिंग कौन कौन लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी हवा कथा, दैट इज टैक्टिकल एनालिसिस. ओके, सो दिस आर फॉर्म्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस. पॉलिसी एनालिसिस फ्रेमवर्क गोटे हूँ डाटा ड्रिवेन, गोटे हूँ फैक्ट बेस्ड. ओके, दीज टू आर ऑल्सो रिलेटेड. डाटा ड्रिवेन यूजेस एम्पिरिकल डाटा टू जनरलाइज इनसाइट्स. ओके, relies on empirical fact to deduce policy outcomes. Okay, so these are same, this are closely related. Okay, sorry, these are closely related. Ethical policy guidelines and value based policy guidelines. Okay, these are also closely related. Okay, emphasize ethical consideration in policy formulation. Value based is focus on normative values to guide policy development. Okay, values, these are difficult to quantify. Empirical things, these are easy to quantify. Okay, so policy analysis frameworks. Okay, evolution of policy analysis. Policy analysis as a field has historically evolved through multiple stages. Okay, मुझे एमती कहली वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार पर सब डिस्ट्रक्शन नहीं गला, एवं सोसाइटी को रिबिल्ड करने बहुत गुड एक्सपर्ट्स मान को डकागला. ओके, वर्ल्ड वार 2 पूर्व पॉलिसी रो एनालिसिस रो फोकस कौन था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल फोकस. ओके, पॉलिसी स्टडी वेर एम्बेडेड विद इन पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मोस्ट पॉलिसी decisions were studied by political science and public administration. Focus on rule making and implementation by political institutions. Okay,
पोस्ट वार पर कौन है राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑलरेडी मुझे वेलफेयर स्टेट कौन राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड प्लानिंग सो हेवी यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशन रिसर्च एंड इकोनॉमिक मॉडलिंग ओके तो जेहेतु बहुत गुड़े डिसिप्लिन रो डिफरेंट पर्सपेक्टिव सब आसला से पर्सपेक्टिव गुड़ा को गोटे क्लीयर अंडरस्टैंडिंग तुम क्वांटिफिकेशन आड़ को गले तो स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स मॉडलिंग इकोनोमेट्रिक्स ये सब यूज कराला तापर जना पड़ला जे ह्यूमन वैल्यूज आर सब्जेक्टिव दे कैन फ्लक्चुएट ए लॉट तांको क्वांटिफाई करिकी स्टडी करवाटा बहुत कष्ट देन कम्स द बिहेवियरल रिवोल्यूशन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर व्हिच इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इजीली ओके understanding human behavior on decision making like bounded rationality. What is bounded rationality? That is the that it says that individual ability to make perfect and rational decision that is limited by incomplete information cognitive and time constraint okay because तुम भावुच मुझे यही जिनसा पूरा परफेक्टली रेशनल ही कर पारि गोटे जिनस तुम जो डिसीजन नब गोटे डिसीजन नब तुम भावुच जदि मु पूरा रेशनल डिसीजन नहीं मे भी तुम किसी फैक्टर की वेरिएबल मिस कर दे पार्थ तो तुम डिसीजन परफेक्टली रेशनल हो न थाई पारे ओके सो रेशनैलिटी इज ऑलवेज बाउंडेड so that's the idea stake holder theory means it is a concept of business ethics where it says that a company should serve the broad range of individuals and groups not just their not just their shareholders okay so what a broad range of stakeholders मानकु कंपनी मानकु सर्व करिया कथा ओके बिहेवियरल रिवोल्यूशन डेल्ट विथ दिस दैट तुम जिते रेशनैलिटी देखाओ जिते नंबर फंबर आण क्वांटिफिकेशन कर बट योर कैपेसिटी टू टेक रेशनल डिसीजन इज लिमिटेड ओके इज लिमिटेड यू कैनॉट ऑलवेज क्वांटिफाई बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज वेरिएबल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ओके देन स्टेकहोल्डर थियोरी देखिला प्रोफेशनलाइजेशन एस्टाब्लिशमेंट ऑफ थिंक टैंक्स पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ग्रोथ ऑफ पॉलिसी स्कूल्स एंड पॉलिसी एनालिस्ट रोल्स इन ब्यूरोक्रेसी ओके प्रोफेशनल पॉलिसी एनालिसिस ओके तो गोटे प्रोफेशनल सेटअप रे पॉलिसी को एनालाइज करा जिवो लाइक थिंक टैंक तमरो नीति आयोग ओआरएफ ओके सो दीज आर थिंक टैंक्स who will analyze policies contemporary era 2000 to present rise of evidence based policy and participatory planning real time data okay because due to focus on sustainability inclusion and innovation with the growth of AI big data and real time analytics okay so amok ebe evidence based policy making kariya ko subidha habo because our focus is on sustainability inclusion and innovation okay so this is the stage of contemporary era policy analysis okay so evolution okay first administrative and legal thela policy embedded in political science and public administration खाली रूल मेकिंग ऊपर ही फोकस थेला पोस्ट वार पर क्वांटिफिकेशन बहुत ये कराला वेलफेयर स्टेट आसला स्टेट रो बहुत रोल आसला स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक मॉडलिंग करागला ड्यू टू इंटीग्रेट वेरियस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच बिहेवियरल रिवोल्यूशन आसला एबे देखाला जे ह्यूमन बिहेवियर कैन बी फ्लक्चुएटिंग फोकस ऑन स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑन पॉलिसी then professionalization growth of think tanks policy schools and analyst roles contemporary era re public policy is a specialized field okay harold laswell jota start kartale contemporary world public policy making is a specialized field that deals with evidence based policy making focus on sustainability and digital integration okay टाइप्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस आम अलरेडी देखले गोटे हूँ एम्पिरिकल गोटे इभालुएटिव गोटे नॉर्मेटिव ओके एम्पिरिकल कौन हो सारी नॉर्मेटिव कौन हवा कथा इभालुएटिव हूँ जोटा हो गला ताकू एबे स्टडी कर ओके एम्पिरिकल casual interpretation of past events budget trends in for example budget trends in health sector evaluative check if the objectives are met or not RT right to education implement केते बाट हला जेमदी prescriptive it recommends action कौन हबा कथा suggest pollution control methods and laws okay so empirical is descriptive कौन हेची normative is prescriptive कौन हबा कथा evaluative is judgmental एबे कौन हेची ताको एनालाइज करो okay same thing retrospective prospective past policy retrospective is past policy outcomes and implementation used for audit learning lesson and accountability okay study of demonetization impact on rural economy retrospective already जोटा जिनस हो जाए तार एनालिसिस prospective forecast जोटा हबार अच्छी ताकू स्टडी करो forecast outcomes of potential policies used in policy planning and scenario building okay predict the effect of uniform civil code okay this is prospective policy retrospective policy okay gap analysis between intent and outcome is a major use case of retrospective analysis ओके तो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस रे कौन हेजी आमे सेटा स्टडी करू तो कौन हेजी सेथरे हमर इंटेंट कौन थिला आमे कौन करि पारलु दिस इज ए मेजर फील्ड ऑफ स्टडी इन रेट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी एनालिसिस
Okay, the gap between what was the intent of policy and what is the outcome of the policy. Okay, the predictive, prescriptive and descriptive भी है पारे policy making. Okay, predictive means forecast the future consequence based on simulation and models, for example impact of AI in jobs. Prescriptive, recommend a specific course of action, it is subjective based on analyst judgment. For example recommending universal basic income, कौन हवा कथा universal UBI एबे नहीं तो सेटा हेल्ले कौन हबो, that is prescriptive. Okay, descriptive, describes the policy as implemented. Okay, it is evaluation. Okay, post implementation तो कौन एबे policy predictive ओके पॉलिसी कौन है सेटा को एक्सप्रेस करे, फॉर एग्जांपल इवैल्यूएशन ऑफ स्वच्छ भारत. ओके सो देखिलो प्रेडिक्टिव मैंने फ्यूचर फोरकास्टिंग कौन हबो. ओके इम्पैक्ट ऑफ एआई इन जॉब्स. प्रेस्क्रिप्टिव कौन हबा कथा. ओके ये कहूँ कौन कौन स्पेसिफिक कोर्स एक्शन नहीं हम लाइक यूनिवर्सल बेसिक इनकम. डेस्क्रिप्टिव अच्छी जोटा ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होती सेटार इवैल्यूएशन. ओके जोटा ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होती पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन. ओके प्रेस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव आर एंटीसिपेटरी. ओके एंटीसिपेटरी मैंने सेटा फ्यूचर रे कौन हम सेटा को डील विथ दैट डील्स विथ दैट. प्रेडिक्टिव मैंने फ्यूचर कौन हम, प्रेस्क्रिप्टिव मैंने कौन हवा कथा दैट डील्स विथ द फ्यूचर एंटीसिपेशन. डेस्क्रिप्टिव पॉलिसी इज रिफ्लेक्टिव. रिफ्लेक्टिव मैंने इट रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड. ओके तो these are all related, predictive, prescriptive, descriptive, तमर empirical, evaluative, normative, retrospective, prospective. Okay, these are all related. Methods and techniques. Cost benefit analysis, compares the total expected cost versus benefit, input output analysis. Okay, the simulation and forecasting, statistical methods for future prediction, linear programming, optimization को study करे. Marginal analysis evaluates incremental changes. तो गोटे यूनिट जदि तुमर आउटपुट सॉरी गोटे यूनिट जदि इनपुट तुम चेंज कल तो आउटपुट केते यूनिट दब तुम, दैट इज द मार्जिनल एनालिसिस. फॉर एग्जांपल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सिमुलेट कंजेशन वर्सेस कॉस्ट ऑफ मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके तो कंजेशन और कॉस्ट भितर तुम कोटा को ऑप्टिमल तुम डिसीजन नब, दैट इज ए एग्जांपल ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मेकिंग. नाउ क्वालिटेटिव टेक्निक्स एज आई हैव सेड. सो दीज आर ऑल क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. एथरे तुम डील्स विथ नंबर्स. Alright, deals with numbers. So cost benefit analysis, input output, simulation, linear programming, numbers, they deal with numbers. Okay, qualitative, they cannot be dealt with numbers because human values are involved, human values are involved. Stakeholder analysis. Okay, बहुत सारे stakeholder अच्छे तांको analyze करो. Delphi method, expert consultation. Delphi method तुम stakeholder. Okay, Delphi method is expert consultation. तमरो expert consultation means you consult a panel of experts through questionnaires, okay, to arrive at a consensus about a topic or a problem. Okay, stakeholder analysis आमे already देखिलु पूर्वरु देखिथिलु तमरो stakeholder theory. Stakeholder theory is different from stakeholder analysis because stakeholder analysis it is a process to identify and understand the stakeholders the impact. Stakeholders that are like individuals or groups who can affect or are affected by a product or a project or an organization. Okay, so its stakeholder analysis strategically manages the relationship between different stakeholders, okay, involved in a policy. Okay, Delphi method. SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat analysis. Okay, surveys, interviews, focus groups. Okay, यही सब जिनस गुड़ा तुम क्वालिटेटिव मेथड जाए. एटा दीज आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई. ओके सेम थिंग गिवन इन अ टेबल. Now comes the system model for policy analysis and institutional approach. Policy analysis involves evaluating policies and effect to understand how they function and how they can be improved. Different approaches and models have emerged over time to study and analyze policies. Two prominent models that can help in analyzing public policy are system model and institutional approach. Okay, so systems model was developed by David Easton. I already देखले systems model. He was a political scientist. His model is based on the idea that a political system works like a black box that receives input, processes the input and generates output. That is the policy decision. Okay, so this approach is useful to understand the cyclical nature of politics. Okay, the black box model कौन देखि दबा तो एथरे गोटे बॉक्स अछि black box. The input is converted to output. Okay, input आसिला ताधरे इंटराक्ट कला ब्लैक बॉक्स भितर आउटपुट कौन है सेटा देखिले. या ब्लैक बॉक्स कहीं कहुए बिकज या भितर कौन होची सेटा आमे देखि पारिबुनी. ओके ब्लैक बॉक्स मॉडल दे प्रोसेस इनपुट टू जनरेट आउटपुट व्हाइल कीपिंग द इंटरनल वर्किंग हिडन एंड अनइंटेलिजिबल. ओके द इंटरनल वर्किंग तुम जानि पारिबुनी. These models are popular in financial market but raise ethical questions due to lack of transparency. Okay, and due with recent advances in machine learning and AI contributing to complexity of black box models across fields,
So they carry risks in financial markets, like they can obscure the true level of risk being taken in financial markets. Black box is different from a white box. Okay, white box कौन जो थे the internal functioning is transparent and open for inspection. Okay, एटा हूँ तुम ब्लैक बॉक्स मॉडल. तुम इनपुट आसला यहाँ सिस्टम अच्छी आउटपुट आसला सिस्टम भितर कौन अच्छी एते कौन अच्छी दैट इज नॉट नोन टू अस. ओके, systems model that is given by David Easton. Key elements: input, demands and support from society that enter the system. These inputs have two components. What is demand and support? Demand is request for change, like demand for welfare reforms or environment protection. Okay, एवढा सब demand. ए demand को fulfill करने पे कौन कौन support अच्छी, like tax payment, resources for like tax payment, vote अच्छी तमर vote लोक मानक support अच्छी कि compliance with laws जदि से demand टा law सहित compatible कि नहीं. Okay, these are the demands and supports in input. Political system is the core of the model, that is the black box where all inputs are processed. This system includes all political institutions. Okay, everything: legislature, executive, judiciary, decision makers, and rules governing political interaction. Okay, so everything is included in the political system. That is the black box. Output: decisions and policies produced by the political system. Outputs can be laws, executive actions, or judicial rulings. Okay, for example, new education policy addressing curricular reforms. Okay, so this policy can be this is the output of a policy that has gone through a systems model. Okay, now feedback: after the outputs are implemented, feedback occurs as people respond to the policy either by supporting or protesting. This feedback is essential to adopt and refining the policies. Okay, same thing, तुम इनपुट रो दुईटा कंपोनेंट अच्छी, गोटे डिमांड अच्छी, आ से डिमांड को सपोर्ट करिया पई कौन कौन सब सपोर्ट अच्छी, दैट एंटर्स द पॉलिटिकल सिस्टम. दिस इज द ब्लैक बॉक्स. ओके, then comes the output जहाँ आसला, फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आउटपुट रो किछि फीडबैक आसीबो. ओके, ए फीडबैकटा रिफाइन करिकी पुणी पॉलिटिकल सिस्टम रे इनपुट भाव पशिबो. ओके, सो दिस इज द सिस्टम मॉडल. इनपुट आउटपुट होइक रहबो ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ डेविड ईस्टन. ओके, सो ईस्टन्स मॉडल प्रेजेंट्स द पॉलिटिकल सिस्टम ब्लैक बॉक्स where inputs and supports are processed, but the internal decision making is often opaque and complex. Model underscores the idea that political systems are dynamic and interact continuously with the external environment. Okay, तो डायनामिक प्रोसेस, तो तुम इनपुट नब, फीडबैक नब, आउटपुट दौथुब, सो ये डायनामिक प्रोसेसटा कंटिन्यू होइक चले. ओके, बिहेवियरल इवोल्यूशन. Okay, and Easton's contribution. David Easton was a key figure in behavioral evolution. Okay, in the 1950s and 60s. So his contributions: empirical study of political behavior. देखो सही जिनस जो क्वांटिफिकेशन कथा मुझे कहूली, सो से कहते तुम पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करने तुम क्वांटिफिकेशन कर. It study how individuals and groups behave within political system. He wanted quantification of political analysis. Okay, he encouraged the use of quantitative methods. Okay, like survey, statistic analysis to study politics. Okay, and he produced this systematic theory. He advocated for system analysis of political structure and behavior, breaking away from traditional descriptive politics. Okay, descriptive policies are also called armchair theories. आर्मचेयर थियोरीज जो माने आगुरी जमी स्कॉलर मैंने बसी बसी खाली ह्यूमन वैल्यूज उपर कमेंट्री दौले, ही सेड कि तुम सेमती कमेंट्री दिवनी, तुम जाओ फील्ड को जाओ, एनालिसिस कर, जहाँ भी ह्यूमन बिहेवियर कि पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ भी सब तुम फाइंडिंग अच्छी ताको क्वांटिफाई करिकी साइंटिफिक ताको अंडरस्टैंडिंग दियो. ओके, दैट इज द behavioral evolution, David Easton's contribution. Okay, but what are the limitations of this model? While the system's model is insightful, okay, it has several limitations, like it is too simplistic. Input output framework may oversimplify complex political and policy making. Okay, because the bhitarata the black box, आमे तार भितर कौन फैक्टर होची ताको तो एनालाइज करूने, so that is the black box that may oversimplify the complex problems. Okay, exclude power dynamics, fails to account for power struggle that occur within the political system, within the black box. Okay, like influence of elites, interest groups, pressure groups and other power brokers. Okay, एगुड़ा सब power dynamics को count करोनी सेटा. Neglect of political institution, model does not explore the role of specific institutions like legislature, judiciary in shaping the policy. Okay, institution is because सबू जाक ब्लैक बॉक्स रे ही अच्छी, तो ब्लैक बॉक्स रो निटी ग्रिटी कंपोनेंट जो मैंने सब अच्छा तांकर निटी ग्रिटी को ए सिस्टम एनालिसिस इग्नोर करुच्ची. दैट इज द लिमिटेशन. एंड वैल्यू न्यूट्रल. ओके, द मॉडल अज्यूम्स ए न्यूट्रल प्रोसेस मीन्स वैल्यू न्यूट्रल, नॉट कंसिडरिंग हाउ वैल्यूज, आइडियोलॉजीज एंड बायस इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजन. ओके, तो ही वाज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, तो जमी तुम वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, राइट्स, ड्यूटीज, ओके, ऑनेस्टी,
एगुड़ा सब ह्यूमन वैल्यूज ओके यही जिनस गुड़ा को क्वांटिफाई करवा बहुत ही कष्ट ओके जदि भी क्वांटिफाई कर दे आर vulnerable to change very quickly okay so that is why they are difficult to quantify okay so these system theories cannot be value neutral तुम ह्यूमन वैल्यूज को दे शुड कनसीडर ओके तापर तुम बिहेवियरल रिवोल्यूशन आसला जोटा आम अलरेडी देखीचे ओके एटा गला सिस्टम्स अप्रोच नाउ कम्स द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच institutional approach focus on the role of government institution and their interaction in shaping public policy unlike the system model emphasizes the process and flows the institutional model places greater focus on formal structures and power of political institutions like legislature judiciary and executive okay तो आम देखिले तुमर डायबिटीज कर ब्लैक बॉक्स थिला ब्लैक बॉक्स भितर बहुत गुड़ा फैक्टर रोचे तुम पॉलिटिकल फैक्टर सोशल फैक्टर ओके सपोज रिलीजियस फैक्टर गोटे फैक्टर ब्लैक बॉक्स भितर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर भी रही पारे ओके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर भी रही पारे दिस इंस्टीट्यूशनल फैक्टर इज द एटा जो देखुचे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू पॉलिसी एनालिसिस एथिरे तुम इंस्टीट्यूशंस ऑफ लेजिस्लेटिव जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को एक्सक्लूसिवली स्टडी करा जाए ओके सो तुम जदि एमती भी देखियो तुम सिस्टम्स अप्रोच गोटे बहुत ही बड़ फील्ड तुम ता भितर तुम ओके सिस्टम अप्रोच बहुत बड़ा फील्ड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज ए सब फील्ड विदिन सिस्टम अप्रोच ओके सिस्टम अप्रोच रे ओवरऑल कंसीडर करा जाए पूरा पॉलिसी टा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच रे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन मानक रोल स्टडी करा जाए इन पॉलिसी एनालिसिस ओके सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दे प्ले सेंट्रल रोल इन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूनिवर्सैलिटी पब्लिक पॉलिसी पब्लिक apply to all citizens within a jurisdiction किसी डिस्क्रिप्शन है पब्लिक जेहेतु कोर्स एंड गवर्नमेंट्स एनफोर्स पॉलिसीज विथ लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी मेकिंग देम बाइंडिंग ऑन सिटीजन्स ओके बिकॉज देयर अथॉरिटी इज लेजिटिमाइज्ड दे जहाँ डिक्टेट आसो से समस्ते फॉलो करिया बाध्य ओके रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस Government institutions, legislature, executive, judiciary are responsible to create and implement public policies. They define the legal framework that govern policy formulation and enforce laws through agencies and executive action. Okay, institutions ensure that policies have legitimacy and authority, which is crucial for implementation and effectiveness. Okay, so okay. First होजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ए तीन इंस्टीट्यूशन दे आर रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी दे डिफाइन द लीगल फ्रेमवर्क्स ओके तापर जहाँ भी आसीबो policy they are legitimate okay and authority means power plus legitimacy okay legitimacy means what okay so what is authority means exercise of power is ability of someone to make others do something even if it is against their will okay this exercise of power if it is considered legitimate by the people then that is the authority okay then that authority is legitimate okay authority means exercise of legitimate power all right so power can be illegitimate also but authority is where the exercise of power is considered legitimate or valid by the people it has public assent okay so strength of institutional approach it is explains how formal government structures influence policy making that is focus on structure emphasizes the role and function of institutions like legislature executive judiciary in shaping policy decision okay it is legal and procedural clarity भी था इधर okay underscores the importance of clear legal frameworks and institutional norms that guide policy formulation okay systematic examination institutional analysis helps identify how laws constitutions and rules shape decision making and influence outcomes okay limitation ओभर एम्फासिस ऑन फॉर्मालिटी ओके ये देख तुम लीगल प्रोसीजरल क्लारिटी ही थाए बट अधिका जदि लीगल प्रोसीजरल ये पशिबो देन दैट विल लीड टू रेट टेपिज्म आल्सो ओके सो ओभर एम्फासिस ऑन फॉर्मालिटी फॉर्मल प्रोसीजर्स ओके जो कहते बहुत गुटे लेवल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत गुटे फाइल थ्रू देकी तुम काम जीव ओके सो दैट इज ए लिमिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच दिस मॉडल ओवर एम्फासाइजेस द फॉर्मल एस्पेक्ट्स व्हाइल इग्नोरिंग द इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर्स ओके इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर्स पे गवर्न करे public policy को like political parties interest groups okay then neglect of public participation institutional approach sometimes overlooks the role of public opinion and citizen engagement in policy making okay neglect of public participation okay जेमती तुमर farmer laws okay farm bills जो तीनटा आसला सेटा को due to lack of consultation with public and citizen engagement that policy had to be withdrawn okay so neglect of public participation can lead to bad policy
inflexibility may not account for changes in political behavior or societal shifts that influence policy outside the formal institutional structures. Okay, तो बहुत गुड़ा variable अच्छी तो से अलग variable गुड़ा को that variables that come outside the governance structures, these institutional structures, they may not be taken into account. Okay, that can lead to inflexible policies. Okay, so conclusion, both systems model and institutional approach provide valuable framework to analyze public policy, but they have the strength and limitation. System model helps understand the broad input output process while focusing on feedback and continuous interaction between system and society. Okay, institutional approach focus on power and role of formal political institutions to shape policy, but can overlook informal and non-institutional influences. Okay, together they offer complementary perspective on how policies are formulated, implemented and modified. Okay, so same जिनस जो कहली systems model जदि Venn diagram देखियो systems model wide सब जिनस को डील करे. ओके, सब जिनस को डील करे ब्लैक बॉक्स भितर, बट इंट्रिकेट निटिग्रेट ब्लैक बॉक्स भितर जो सब अलग अलग फैक्टर अच्छी तार निटिग्रिटी को कंसीडर करेनि. ओके, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज one of the factors that is inside the black box of systems approach. Okay, so this much for today. We will deal with